दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे बिगिनर्स के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैनल को। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्सेल चार्ट में हमारे जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो एडिशन के, सब्ट्रैक्ट के, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मैनी मोर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ऐड का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब हमें कोई भी आइटम को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 2 और 4, इसको हमने ऐड करना है। तो जस्ट हमने इक्वल का फॉर्मूला लगवाएंगे। इक्वल, देन C4 plus CD4, and the result is 6. Same like in subtraction, we use equal to A5 subtract minus का sign B5, and the result is 2. Likewise, if we go with multiplication, like 5 and 2, we have to multiply and the result will be 10. So equal to A6 multiplication B6. The result is 10, right? So if we divide, so first of all, for example, 4, we have to divide by 2. So the result will be A7 forward slash B7. The result is 2. Likewise, now the question is sum. So if we add, for example, instead of 2 columns, we have many more one, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, and many more. So instead of adding single cell every time, ये वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो सम के लिए हमने फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग C. The result is 21 for the previous method, and if we use sum formula bracket open, then select the cells bracket close, and the result is also 21. So if we have more than two cells and huge cells, we can use a sum formula instead of adding individual cells. So now we will go with minimum formula. Now minimum stands for if in a column, if you see the minimum value is 2. ओके, सो अगर हम देखेंगे हर कॉलम में तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो एक्सेल में सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट पुट इक्वल टू एम आई एन मिनिमम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट द सेल्स ब्रैकेट क्लोज एंड द रिजल्ट इज दिस इज द मिनिमम कॉलम। फॉर एग्जांपल, इफ आप यहाँ पर आप चेंज करते हैं इंस्टेड ऑफ 2 आप 1 मेंशन करते हैं तो ये मिनिमम आ गया 1। लाइकवाइज मैक्सिमम अगर आप देखना चाहेंगे तो जस्ट instead of minimum use maximum formula, like in a column maximum is 5। okay, so हम यूज करेंगे इक्वल टू max maximum bracket open bracket close 5। so maximum is 5। so इसको हम 5 की जगह 8 कर देते हैं। so maximum will be 8। so hope आप लोगों को समझ आएगा ये बेसिक एक्सेल फॉर्मूला। तो इसके आगे वाले फॉर्मूला हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। so please continue to watch our videos and please subscribe our channel. Thank you so much.